Good evening everyone, welcome to EduTap and welcome to another important CT 360 series session in which we cover the G and ESI current affairs from examination point of view, and today we will be covering the important current affairs from 19th to 20th of June 2025. So my dear friends, if I am audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. Let me tell you here that today we will be covering the important current affairs of 19th to 20th of June 2025, and two very important topics today we will be covering. That these are the reports that can be asked in the examination, and that is why it is very important for you to attend this session completely, right? So I hope that I'm audible and visible to all of you. Okay, let me tell you that we conduct these sessions across three stages. The first stage is the one where we revise the important aspects of the previous session, covering all the important aspects and the dimensions of the previous session. Then we move on to the current affairs of the today's dates, and then we will follow it by solving the MCQs that can be asked in the exam from these current affairs. Okay, so let's start it. And good evening, Guru Raj, Shanika, and all of the people who have joined us live today. So these are the topics that we will be covering here in the today's session. Let me tell you here that here the first four articles are the one. So basically the people who are preparing for regulatory bodies exams, तो उनका पेपर phase 1 और phase 2 इस तरीके से रहता है. तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस से जो हमारे टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस के अंदर, उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ phase 1 and phase 2, right? And the topics which are only relevant for phase 1 and not related to the syllabus topics, they are only relevant for phase 1. So considering this, the first four topics are important for your phase 1 and phase 2. Okay? Now the remaining articles are important for only phase 1 of the examination. And if you are someone who is preparing for insurance examination, banking examination like IBPS, SBI, then all these current affairs you will be looking at in your phase 2 examination. ठीक है जी? Now I hope that all of you have revised the previous session completely, and now I will be taking a small test of yours to analyze and to make sure that yes, you have retained all the important information from the previous session. So here let's start the revision first. The first question is on the 113th International Labour Conference, which is being conducted by the International Labour Organization. You have to tell me here the place where exactly this particular conference was held. Where exactly it was held? So it was held at the headquarters of ILO, that is Geneva. Geneva is the right answer. Moving ahead, during this particular conference, a convention was been adopted, and they have adopted the convention to prevent and protect the workers from which hazard in the workplace. तो workplace पर वो कौन सा hazard है जिससे protect करने के लिए इस convention को adopt किया गया? That is your biological hazard. That is the right answer. Moving to the next question, which country has joined BRICS as a partner country? और ये fourth Asian country बना है to join BRICS as the partner country. What is that country? It is Vietnam. Vietnam is the right answer. And I want all of you to make sure that you are giving me the answers in the chat box, because it is very, very important for us to ensure this, that you have retained this information from examination point of view. And if there is someone who has not attended the previous session, let me tell you that with the help of this session also you will be able to cover the most important aspects. But still I will recommend you that after the end of the session, make sure you are going back to the other session, right? That is the previous one. Moving ahead, FASTag based annual pass costing this will be rolled out from August 15, 2025. So what exactly is that cost of the FASTag annual pass? Earlier it was rupees 10,000 and now it has brought down to rupees 3,000. That is the right answer. Next question, QS World University Rankings 2026 were released. Which university has topped this particular ranking? It was MIT. MIT of United States. Okay? And when it comes to the India, so what is the name of that institution which was on the top, which was at 123rd position in this particular ranking? So please tell me in the chat box what exactly is the right answer here. So my dear friends, it is very important for us to cover across these dimensions the topics that we have covered. Okay, so here the right answer is IIT Delhi. IIT Delhi is the right answer. Next question, Dash is an animation film created by Suresh Ariat which has recently won a award. What is the name of that particular movie? That is Desi Yoon.
देसी हूं इज द राइट आंसर. Next question. India's largest automobile Gati Shakti multimodal cargo terminal was being inaugurated at Maruti Suzuki India Limited. Where exactly this plant is located? It is located in Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Please tell me here. It is in Manesar. Manesar, Haryana is the right answer. Next question. So Dash has become the first state in India to implement an e-voting system. तो ई वोटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाली इंडिया की पहली स्टेट का क्या नाम है? दैट इज बिहार. बिहार इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज कोलैबोरेटेड विद द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन. सो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने DIBD के साथ यहां पर एक MOU साइन किया अंडर विच दे विल बी एम्पावरिंग द मीजो कम्युनिटी? द आंसर इज ऑलरेडी हियर. मीजो से आता है आपका मिजोरम. So Mizoram is the right answer. Next question. Dash is the name of India's first cyber security operation center. What is the name? It is Sahkar Suraksha. And which state, which bank has basically launched it? It is the Maharashtra State Cooperative Bank. Next question. Exercise Shakti was being conducted between India and the army of which country? सो इंडिया का ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? लेट मी टेल यू हियर दैट वरुणा इज अनदर एक्सरसाइज व्हिच इज बीन कंडक्टेड. गरुड़ा इज आल्सो द अनदर एक्सरसाइज व्हिच इज बीन कंडक्टेड विद द सेम कंट्री. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री? इट इज फ्रांस. फ्रांस इज द राइट आंसर. सो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स अनुष्का, शनिका, गुरुराज, जूही, all the people have given me the right answers in the chat box. Well done, my dear friends. That really shows that yes, you have revised the previous session in a very detailed manner. अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ. And the very first topic that we are going to cover here today is the Performance Grading Index 23-24. So guys, you can see here that this index has been released by the Ministry of Education. And to my left, you can see the school-going students are there, right? So Government of India under Ministry of Education, where the Department of School Education and Literacy is there, which basically makes this particular report, that is Performance Grading Index. We all know that India's education sector is basically one of the largest in the world, right? And there are so many people who are taking education in our country. So it is really very important to ensure the progress of the schooling, the progress of the education system, which is being brought up to us by the schools which are there across the states and union territories of our country. And that is why to assess the performance of these particular schools, that is why we have launched a performance grading index कि उन schools की क्या performance रही है, so that we can identify what exactly are the different steps we need to take in order to address the existing gaps in the education system which is being brought forward by the schools across the country, right? So that is why you can see that it identifies specific interventions to make transformational changes in the school education. हमारे स्कूल एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाने के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है, ये हमें पता चलता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से, बिकॉज हियर वी मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल्स अक्रॉस द डिफरेंट डोमेन्स, राइट? So basically it is as per the National Education Policy Recommendations and Sustainable Development Goals. इसके अंडर जो भी हमारी चीजें होनी चाहिए and that should have been there, वो मॉनिटर की जाती हैं, on the basis of which we basically take the steps in order to close those critical gaps here. ठीक है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था 2017 के अंदर. पहले था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ओनली. आफ्टर दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0. And now you have to tell me here that in which year, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, in which year the performance grading index was being transformed into PGI 2.0. ये आपको मुझे बताना है होमवर्क में, राइट? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. So guys, let us talk about the performance grading index. So it is basically constructed on the basis of 73 indicators, which are further divided into the two categories. So two categories जिसके अंदर total 6 domains हैं, and these domains are having some indicators attached to them, and there are total 73 indicators with a total weight of 1000. तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अंदर there are two categories across which
we basically monitor the performance of the schools. And what exactly these are? These are outcomes and governance management. आउटकम के अंदर फर्दर 4 डोमेन्स हैं और गवर्नेंस के अंदर 2 डोमेन्स हैं. अंडर द आउटकम इट इज द लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, कि क्या वॉट एवर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द एजुकेशन. Then accessibility about of the education in the school, infrastructure and facilities, whether we are having the proper infrastructure and facilities provided in the school or not. Then equity is there or not. Then under the governance management, we are having the governance processes, that how that particular school is being governed, whether it is following a particular framework and the structure or not as per the rules of the country. Then teacher education and training, how much trained the teachers are, right? So all these domains are being considered in order to monitor the performance of these particular schools, ठीक है, across the states and union territories. Now let me tell you here that here we are not assessing the individual school. We are not assessing individual school. We are basically considering the entire education system of the schools of the states and union territories. तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना चाहिए. और इन सभी डोमेन्स के साथ कुछ इंडिकेटर्स अटैच्ड है विच आर हैविंग सम पर्टिकुलर वेट्स हियर एंड द टोटल वेट इज 1000. So my dear friends, what exactly we do is on the basis of the score which are being attained. मान लीजिए कि किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने कोई एक्स स्कोर लिया, ठीक है. इन दीज इंडिकेटर्स, हर एक इंडिकेटर के साथ एक स्कोर असाइन होता है, एक पॉइंट असाइन होता है, ठीक है. तो हमारी स्टेट और यूटी ने कितना पॉइंट लिया उसको उस स्कोर से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर टोटल वेट निकाला जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी बेसिकली सी दैट ओके वो उसका टोटल स्कोर कितना आया. And on the basis of the scores which are being attained by the lowest performing state, जो सबसे कम परफॉर्मेंस है जिसकी सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है, उसके स्कोर को यहाँ पर टोटल वेट से सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ये थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो 1000 में से मान लीजिए कि जो टोटल स्कोर था हमारा, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट टोटल स्कोर इज Z, ठीक है. सो बेसिकली उसके बेसिस पर हम एक लिमिट निकालते हैं जिसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, because we are having 10 grades in the performance grading index. तो टोटल 10 ग्रेड्स हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में और उसके बेसिस पर सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को उन ग्रेड्स के अकॉर्डिंग यहां पर प्लेस किया जाता है. एंड दैट्स हाउ वी बेसिकली सी दैट व्हिच इज द टॉप परफॉर्मर, व्हिच इज द वर्स्ट परफॉर्मर. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. अब ये 10 ग्रेड्स क्या है, लेट अस सी दैट. सो यू कैन सी दीज आर द 10 ग्रेड्स starting from the lowest to the highest performer. At the lowest there is the Akanshi 3, then Akanshi 2, Akanshi 1, then we are having Pracheshta 3, 2 and 1, then Uttam, Ati Uttam, Utkarsh and Daksh. So the top performer will be in the category of Daksh and the worst performer will be in the category of Akanshi 3. Now you can see here that the lowest score is basically 401 to 460. जो सबसे लास्ट कैटेगरी है that is of the state जिसका जो रेंज रहेगा 401 से 460 के बीच में. So basically इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर एक you can say रिप्रेजेंटेटिव ग्रेडिंग हम बनाते हैं, ठीक है. तो हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं. ओके, now we will be understanding that what exactly is the performance of the different states and union territories in the performance grading index. So guys, that is the reason that we basically call it a grading index. I hope this is clear. So now let's try to see what exactly these are. So यहाँ पर हमारा आ जाता है दोस्तों 23-24 का ये जो grading index है इसका result, and you can see here, you will be shocked to see that there is not a single state and union territory in the top 4 categories. तो टॉप 4 कैटेगरीज के अंदर, टॉप 4 ग्रेड्स के अंदर हमारी एक सिंगल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नहीं है. एंड द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूटी इज चंडीगढ़, जिसने फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इस इंडेक्स के अंदर टॉप किया है. एंड दिस इज ऑन द 4th कैटेगरी, दैट इज प्रचेष्टा 1. सो द टॉप परफॉर्मर इज इन द प्रचेष्टा 1 कैटेगरी, इन द प्रचेष्टा 1 ग्रेड हियर, जिसका स्कोर है आपका 51 to 60%. तो 60% से ज्यादा किसी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का स्कोर आया ही नहीं है. दैट इज रियली शॉकिंग पार्ट. और अगर हम बात करते हैं द लोएस्ट परफॉर्मर वाज मेघालय. द लोएस्ट परफॉर्मर वाज मेघालय व्हिच इज बेसिकली इन द ग्रेड ऑफ आकांक्षी 3. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या याद रखनी है, लोएस्ट परफॉर्मर कौन सा था, मेघालय. कौन सी कैटेगरी में है वो, आकांक्षी 3 में है. और
टॉप परफॉर्मर कौन है? चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज इन विच ग्रेड? इट इज अंडर द ग्रेड ऑफ प्रचेष्टा 1. ठीक है, that is between the range of 51 to 60% of the score which it has achieved. So that is the most important part. Now you can see here guys that the total number of states which are there in the next category is basically सबसे ज्यादा states and union territories कौन सी category के अंदर थी? They were in the Akanshi 1. You can see 14 states are there. After that 10 states each are basically there in Akanshi 2 and Pracheshta 3. ठीक है, प्रचेष्टा 3 और आकांक्षी 2 में आपके 10 स्टेट्स ईच है, तो इतना डिटेल में याद नहीं करना. सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉप परफॉर्मर इज चंडीगढ़ इन द प्रचेष्टा 1, वर्स्ट परफॉर्मर इज आकांक्षी 3 के अंदर मेघालय, एंड देन द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज आर इन द आकांक्षी 1, दैट इज 14. I hope this part is clear to everybody. Okay, now moving ahead. So moving ahead, you can see here that when we compare the performance of the states and union territories, my dear friends, you can see here that in this particular year, 24 states scores have increased. 24 states की जो performance है वो यहाँ पर increase हुई है, and the remaining 12 states performance has decreased in this particular performance grading index. तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 24 स्टेट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, 12 स्टेट्स की परफॉर्मेंस डिक्रीज हुई है. नाउ मूविंग अहेड, व्हेन वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अक्रॉस द डोमेन्स, जो हमने देखे, देयर आर टोटल 2 कैटेगरीज जिसमें फर्दर देयर आर 6 डोमेन्स. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर गेन, तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड तेलंगाना, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस शो की इसके अंदर. देन लर्निंग आउटकम्स के अंदर कोई भी स्टेट दक्ष कैटेगरी के अंदर रीच नहीं कर पाई है. ठीक है, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी डोमेन के अंदर जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं जनरल कैटेगरी और एससी एंड एसटी कैटेगरी के अंदर ये नैरो डाउन हुए हैं. राइट, दैट मींस जो एजुकेशनल आउटकम्स हम देखते हैं इन दीज 2 कैटेगरीज, सो बेसिकली इट हैज नैरोड. देन इन द एक्सेस इंप्रूवमेंट्स, बिहार एंड तेलंगाना ने सबसे ज्यादा गेन शो किया है. ठीक है, तो टॉप परफॉर्मर इन द एक्सेस इंप्रूवमेंट इज बिहार एंड तेलंगाना. इक्विटी गैप के अंदर हम बात की जाए तो जो हमारा और गैप था बिटवीन द एससी एसटी एंड द जनरल कैटेगरीज, एजुकेशनल आउटकम, इट हैज नैरोड डाउन अंडर द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट? सो एनीबडी हैविंग डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, माय डियर फ्रेंड्स. So this is the performance grading index. Just try to remember here that what are the outcomes, what are the governance management, these are the 2 categories, what are the 6 domains here, total weight is 1000, who are the top performers, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज कर रही है, all these things are very important to be remembered here. Okay, now let's try to move on to the next important report, that is the energy transition index. So my dear friends, energy transition index has been released by a organization which is headquartered in Geneva, that is World Economic Forum. And World Economic Forum ने release किया इस report को, which basically assesses the progress of the countries towards energy transition. Energy transition, what exactly is that transition we are talking about? We all know that we are in the transition from fossil fuels to the clean energy, right? तो fossil fuel से clean energy की तरफ हम transition में हैं, और इसी ट्रांजिशन को हम असेस करते हैं अंडर द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. सो बेसिकली अंडर दिस रिपोर्ट वी सी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज एंड देयर ट्रांजिशन रेडीनेस, की वो कितना रेडी हैं इस ट्रांजिशन के लिए. ठीक है, तो 2 चीजों को हम असेस करते हैं अंडर द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स दैट इवन द हेडक्वार्टर आर बीन आस्क्ड. तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर याद करना है तो वेरी इजी, W, World Economic Forum, right? E, F, and then it comes G. G for Geneva. Where exactly is the headquarter of World Economic Forum? And now the task for you is you have to tell me here who is presently serving as the head of the World Economic Forum. ये आपके लिए homework है. You will be telling me in the chat box. ठीक है? So ये हमने अपने previous sessions में काफी बार इस चीज को कवर किया है, and I believe कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे. ओके, बढ़ते हैं अपने फ्रेमवर्क की तरफ. सो व्हेन इट कम्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, सो देयर आर बेसिकली 3 एरिया, दैट इज द सिस्टम परफॉर्मेंस. इन द सिस्टम परफॉर्मेंस वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पिलर्स across which we assess the countries, which includes equity, sustainability and security. जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कितनी ज्यादा सस्टेनेबल है,
क्या वो इक्वली सभी लोगों को मिल पा रही है? देन वी आर हैविंग वेदर वी आर हैविंग द एनर्जी सिक्योरिटी और नॉट. देन वी आर हैविंग द ट्रांजिशन रेडीनेस. तो ट्रांजिशन रेडीनेस में द थ्री पिलर्स आर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल. सो एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है ट्रांजिशन के लिए, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास प्रॉपर रहना चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए कंट्री के अंदर, सो दैट वी कैन सस्टेन दैट रेडीनेस, we can sustain that transition, right? And then we are having the core enabler कि उसको enable कौन करेगा? It will be enabled by the regulations and the political commitment. अगर हमारी government does not want this transit, then this transition can never happen, right? And that is why government is the enabler. So the regulation, political commitment is the one, and the next one is the finance and investment. See guys, we know that yes, okay, government wants to bring this transition, but we are not having any money to basically come up with this innovation to create the infrastructure. So how exactly we will be able to do that? So this is the core enabler here. Okay, so that's the important part. Now let's move ahead. So now across this particular framework, the countries are being assessed under the energy transition index, and we see that the rankings are being released by this particular index. So according to this report, Sweden has topped this particular index with the score of 77.5. तो 77.5 के स्कोर के साथ स्वीडन वाज ऑन द टॉप, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. एंड यू विल सी हियर दैट ऑल दीज कंट्रीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज. ये सभी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, राइट, विच आर इन द टॉप. देन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, सो व्हेनेवर वी आर कवरिंग एनी रिपोर्ट and there is a India related ranking, so it is very important to understand that what is India's rank. Let me tell you here, in the last index of the energy transition index, India's rank was 63, and now there is a drop of 8 places, and now India is placed on the 71th position with a score of 53.3. And the country which was at the bottom of this index, it was Congo Democratic Republic, so which was at 118th position. Let me tell you a very important point here, my dear friends, that when it comes to the top 20 कंट्रीज की बात करेंगे, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है, these are basically the advanced economies, right? And in this energy transition index, out of 118 economies, 77 countries are able to increase their ETI score. तो 77 कंट्रीज का ETI स्कोर इंक्रीज हुआ है, और यहां पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि इंडिया वाज ऑन द 71st पोजीशन. लास्ट ईयर इंडियाज पोजीशन वाज 63 ओनली. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ मूविंग अहेड दोस्तों, यू कैन सी एडवांस इकोनॉमीज आर द टॉप. आउट ऑफ टॉप 20, टॉप 16 आर फ्रॉम द एडवांस इकोनॉमीज. आफ्टर दैट अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स की, तो this year we have seen that the ETI score of the countries, the overall ETI score has increased. कैसे इंक्रीज हुआ है? आप देख सकते हैं कि इस साल हमने 1.1% का इंक्रीमेंट देखा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. दैट मीन्स पिछले साल से 1.1% इंक्रीज हुआ. अगर हम उससे पिछले 3 साल देखते हैं तो इट वाज द एवरेज ऑफ 0.4%. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज लास्ट 3 years में 0.4% इंक्रीज वाज सीन, but now you can see that it is almost 3 times at 1.1% from the previous year. And India's rank has declined from 63 to 71 in this particular index. So this is something that we should remember from the energy transition index. Okay, तो energy transition नाम से काफी क्लियर है. energy transition के लिए कितना हम रेडी हैं उस चीज को असेस करता है energy transition index. Which organization releases it? World Economic Forum releases this. ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा that there are 2 components here, right, जिसके across the whole framework is being defined. And after that, the top performer nation is Sweden, and India position is 71. Last year India's position was 63. Okay, so with this we have revised all the important aspects of the energy transition index. Now let's move on to the next news article, that is gender budgeting knowledge hub. So recently guys, a particular national consultation on gender budgeting was being organized. तो एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, राइट? एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट अ इनिशिएटिव वाज बीन लॉन्च्ड, एंड दैट इज द जेंडर बजटिंग नॉलेज हब. सो गाइस, अब बात आती है, आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस जेंडर बजटिंग, ये जेंडर बजटिंग है क्या? सो बेसिकली अंडर द जेंडर बजटिंग वी ब्रिंग द पर्सपेक्टिव of gender equality in the budget
right? So you can see here we just want equality among the men and women. So you can see here gender budgeting is the process of integrating a gender perspective in budgetary and the financial decision making process of a government. जब गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कर रही है, इट इज क्रिएटिंग द बजट, उस बजट के अंदर विमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले, इक्वल फैसिलिटीज मिले जितने मेन को मिल रहे हैं. तो ये चीज इंश्योर करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली is that particular amount that they are investing there, they are allocating there. So that's what we call gender budgeting. So in very simple words we can see it is a strategy to achieve equality for women and men by focusing on how public resources are collected, allocated and spent. तो पब्लिक रिसोर्सेज को हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर स्पेंडिंग इट. सो इन ऑल दीज एरियाज वी मस्ट ब्रिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेंडर बजटिंग. आई बिलीव कि अब ये सभी चीजों को क्लियर होगा, राइट? एवरीबडी इज वेरी मच क्लियर विद दिस. सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर दैट दिस पोर्टल will serve as a digital repository. एक digital repository होगी for creating basically all the processes which we consider while doing the gender budgeting. They are basically collected at one single place in this particular portal. So containing all information related to gender budgeting processes to assist central and state government ministries and other stakeholders. ठीक है? It focuses on strengthening gender budgeting across sectors and sharing best practices in the area. अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 4.49 लाख करोड़ is basically for the gender budget allocation, which basically shows 37% increase over the previous year. लास्ट ईयर का जो अमाउंट था उससे 37% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है इन द जेंडर बजटिंग टू द अमाउंट 4.49 लाख करोड़ रुपीस. ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर. सो बेसिकली यहां पर जस्ट एक सिंपल सा इवेंट हुआ था जहां पर इन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब. दैट इज द राइट आंसर हियर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज फर्स्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड सिंपोजियम. So TTDF symposium was being held. Where exactly it was held? In IIT Madras के अंदर इसे held किया गया, and it was a effort of Department of Telecommunication, IIT Madras and Telecom Center of Excellence. So दोस्तों ये पहला ऐसा symposium हुआ basically where all these responsible stakeholders they have sit together, they have discussed the various issues which we see in the telecom industry, right? And to bring more innovation to the telecom industry, let me tell you here that TTDF scheme was been launched. So basically TTDF scheme की बात करें, why exactly we are covering this? The main reason is that scheme. So TTDF, that is the Telecom Technology Development Fund, was been launched in 2022. ये एक flagship scheme है of the Department of Telecommunication. तो Telecommunication Department की एक flagship scheme है जिसको launch किया गया and it is implemented by Digital Bharat Nidhi. ठीक है? तो इंडिया को बेसिकली डिजिटल बनाने के लिए वी रियली रिक्वायर्स दिस टेलीकॉम वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि अगर टेलीकॉम अच्छे से काम नहीं करेगा दोस्तों, सो इवन वी वॉन्ट बी एबल टू टेक दीज सेशंस लाइव ऑन द यूट्यूब, राइट? एंड यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस दीज सेशंस. सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको इंप्लीमेंट किया. व्हाट इज इट? डिजिटल भारत निधि. भारत को डिजिटल बनाने के लिए डिजिटल भारत निधि इज हियर. ओके, देन ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल. वी जस्ट वांट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दैट टू इंडिजिनस. दैट मींस इंडिया के अंदर ही हम चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो इन नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज, सो दैट हमारे रूरल एरियाज के अंदर जो डिजिटल डिवाइड है, guys, we all know that we are having all the facilities here in the urban areas, right? But in the rural areas where the infrastructure is not there properly, where the people are not having that particular accessibility to the mobile phones or the laptops, so this creates a digital divide between these populations. That is why in order to bridge that particular part, we came with this particular initiative. और यहाँ पर we just want that all the stakeholders are working together to ensure the targets of the scheme. That is, there should be synergy among academia, startups and research institutes. जो हमारा academia है, educational institutions हैं, research institutes हैं, startups हैं, they must work collectively in order to achieve these targets. Then we want to promote technology ownership and indigenous manufacturing. एक culture होना चाहिए technology का हमारी country के अंदर, and that these are some of the major objectives of Telecom Technology Development Fund.
सो मोटी मोटी बात यह है कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पर डालने के लिए, उसके बूस्ट करने के लिए दिस TTDF स्कीम वाज बीन लॉन्च्ड इन 22, ठीक है, 2022. सो जस्ट रिमेंबर TT 2022, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. So this is all the detail related to the TTDF scheme that we need to cover from examination point of view. अब बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पे. That is DPIIT ने एक MOU साइन किया है योर स्टोरी के साथ. And again with the help of this MOU we just want entrepreneurship and startup innovation in our country. तो यहाँ पर DPIIT that is Department of Promotion of Industry and Internal Trade, इन्होंने एक MOU साइन किया है with the योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड. अभी जो योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, इन्होंने एक MOU साइन किया DPIIT के साथ, और योर स्टोरी का एक प्रोजेक्ट है दैट इज द भारत प्रोजेक्ट. सो भारत प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है योर स्टोरी का, और भारत प्रोजेक्ट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर MOU, where we are focusing on promoting inclusive entrepreneurship and strengthen the startup ecosystem in our country. ठीक है. सो हम कैसे इंक्लूसिव बना रहे हैं? So again we will be focusing on tier 2 cities, tier 3 cities in the rural areas, so that वहां पर हम entrepreneurship और startup ecosystem को बढ़ावा दे सके, and this is one of the major objective of this project Bharat. And under this part there is also a target that we are having, that is empowering 1 million entrepreneurs through artificial intelligence powered tools. तो हम AI के जरिए 1 million लोगों को यहाँ पर empower करना चाहते हैं in terms of entrepreneurship and startups, so that they can also scale up their ventures and achieve their dreams, right? So that's all from this news article. DPIIT, your story. Name of the project is Bharat Project. Moving on to the next news article. So Provost of MIT ISA. तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन बने हैं प्रोफेसर अनंत चंद्रशेखरन, जो कि चेन्नई बॉर्न इंजीनियर हैं. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोवोस्ट एट MIT USA. MIT वही इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में टॉप किया है फॉर द 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, राइट. तो अब ये सर्व करेंगे वहां पर एज अ चीफ एकेडमिक एंड बजट ऑफिसर एट MIT US. तो MIT US पे दिस पर्सन विल बी सर्विंग एज द चीफ एकेडमिक एंड बजट ऑफिसर. ये इंडिया के ऐसे पहले पर्सन बने हैं टू रीचिंग दैट पर्टिकुलर स्टेज. सो उनका नाम याद रखना हमारे लिए जरूरी है. बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल पर अबाउट द दिव्या देशमुख. सो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन इन लंदन, और वहां पर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को दिव्या देशमुख ने डिफीट किया है. द पर्सन नेम इज हु यिफान, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं. शी वाज बीन डिफीटेड इन द सेमीफाइनल्स. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप गाइस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिव्या देशमुख व्हिच बेसिकली प्लेज चेस. ठीक है, तो चेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो शी इज एन इंडियन ग्रैंड मास्टर. प्लीज रिमेंबर द नेम दिव्या देशमुख. Moving ahead, Operation Sindu is there, my dear friends. We all know that recently Indian government has launched the Operation Sindu as a humanitarian and evacuation operation, under which we are evacuating the Indians who are stranded in the war-hit Iran and Israel. We all know, guys, that a rift is taking place between Iran and Israel, and there are so many Indians who are there, and specifically Indian students के लिए ये पर्टिकुलर ऑपरेशन लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन सिंधु, जहां पर हम इंडियन स्टूडेंट्स को वहां से लेकर आ रहे हैं along with other citizens as well. Now the PM's visit to Croatia. So Prime Minister Modi ji has become the first Indian Prime Minister to visit Croatia. तो आज तक किसी और प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया था, एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट सच पर्सन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री टू विजिट क्रोएशिया. एंड व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो दोस्तों यहाँ पर एक कल्चरल एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट पिलर है इन द India and Croatia relationship. What exactly it is? You all know that we are having the Hindi chair of Indian Council for Cultural Relations in the capital of Croatia. What is the capital of Croatia? That is Zagreb. तो Zagreb यूनिवर्सिटी के अंदर, जो Zagreb के अंदर Zagreb यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये चेयर है, तो इसको हम और मेंटेन करके रखेंगे till 2030. ठीक है, so that's all from this news article. Moving to the next part, Digital Payments Award. So my dear friends, Digital Payments Award were being announced by the Ministry of Finance, and in this particular award, India Post Payment Bank has been conferred the Digital Payment Award for 24-25 by the Ministry of Finance. And why exactly we are giving this award to IPPB? Because of its
contribution टू एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए और साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स को और बेटर करने के लिए और ज्यादा इजी करने के लिए फॉर द पीपल, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है दोस्तों? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द पीपल ऑफ द नेशन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ formal banking system. So we all know that there are so many people earlier who were there who were not even under the umbrella of formal banking. That we basically means they were not having the accounts. जब उनको पैसे चाहिए होते तो वो सेठ साहूकारों के पास जाते थे and not to the banks, right? So basically उनको इस formal banking infrastructure के अंदर लाया गया. That process is called financial inclusion. Okay? I hope this is clear. अगर IPPB की बात करते तो 100% गवर्नमेंट ओन एंटाइटी है. 2018 में इसको लॉन्च किया गया था. Moving on to the next news article. So PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority, इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं. What is the name of the person? Shiv Subramanian Raman. Shiv Subramanian Raman has been appointed as the chairperson of PFRDA and he will be replacing Deepak Mohanty, whose term got end in May 2025. ठीक है जी. So that's all from this news article. Now the next news article is International Day of Yoga. तो हम already cover कर चुके हैं International Day of Yoga को. So every year on 21st of June we celebrate International Day of Yoga. ठीक है. So 21st जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था दैट वी विल बी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. ठीक है जी. और इस साल की थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ. योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ. I hope this is clear. Now you have to tell me in the chat box that what is that host city of our nation which will be hosting the celebration of International Day of Yoga 2025. Please tell me in the chat box. So guys, apart from that, you all know that when it comes to the International Day of Yoga, तो बहुत सारे आसन्स होते हैं यहाँ पर. And let me tell you here that there are so many aspirants who are doing a very common asan. You know what that asan is? That is सोच आसन. बिकॉज वो सोचते रहते हैं कि यार हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कब पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन नहीं आई अभी तक, जब नोटिफिकेशन आएगी तब स्टार्ट करेंगे. तो वो इसी सोच में डूबे रहते हैं. तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि सोच आसन को अब करने की जरूरत नहीं है. इंश्योर कीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कीजिए करंट अफेयर्स की, बिकॉज करंट अफेयर्स प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल इन योर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो इंश्योर कीजिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कवर कीजिए. एंड हियर आई कैन सी, सो यस, मेनी पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर, दैट इज विशाखापट्टनम. सो मुस्कान, गुरुराज, हर्षल, अनुष्का, शनिका, एवरीबॉडी इज गिवन मी द राइट आंसर, दैट इज विशाखापट्टनम. ठीक है. सो जो सोचासन कर रहा था, इंश्योर कीजिए कि उसको नहीं करना और अब आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करना है, उसकी प्रिपरेशन को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करना है. ठीक है. सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल पर, दैट इज द वर्ल्ड सिकल सेल डे. तो वर्ल्ड सिकल सेल डे की अगर हम बात करें, सो बेसिकली सिकल सेल एक डिजीज है विच इज अ क्रॉनिक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर. और बेसिकली ये डिजीज हमारे ट्राइबल पॉपुलेशंस में देखी जाती है. एंड एवरी ईयर ऑन 19th of June वी सेलिब्रेट वर्ल्ड सिकल सेल डे. एंड दिस ईयर द थीम ऑफ द डे इज ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी. तो काफी लंबी चौड़ी थीम है दोस्तों. याद रखिए, डेट याद रखिए, थीम याद रखिए. And the day is World Sickle Cell Day. That's it that we need to cover here. ठीक है जी. I hope this is clear. अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ. So guys, till now, whatever the important news articles we were going to cover in the today's session, we have done it. But this is not the end. Now the most important part starts of this particular session, because you have basically heard each and every information we have discussed in a very detailed manner. But are you able to retain that? And how you will be able to analyze it by solving the MCQs. Apart from that, in the exam also we are required to solve MCQs. So why not just practice some MCQs here only? So here is the very first question for all of you on the screen, and the question is on the DPIIT's MOU, which has been done with the your story, and you have to tell me here कि किस project के objectives को हम meet करेंगे under this particular MOU. Please see the options and try to tell me here the right answer. What is the right answer here? The right answer is Bharat Project. Option A is the right answer. Absolutely right. Option A is the right answer. I can see in the chat box many people have given this right answer. Okay. So guys, अगर हम बात करते हैं भारत प्रोजेक्ट की, can anybody tell me that what exactly is that figure of the people
whom we will be empowering under the Bharat project regarding entrepreneurship and startup ecosystem. What exactly is that value? That value is 1 million people. 1 million people. And under this, what are the different areas we will be focusing here? We will be focusing on tier 2, tier 3 cities along with the rural areas. That's all. Moving on to the next question, that is on the performance grading index which has been released by Ministry of Education. You have to go through these statements and try to identify the statement which is incorrect one. तो यहाँ देखिए दोस्तों, incorrect statement identify करनी है. What is the process of solving such kind of questions? Whenever एक आपके सामने एक इस तरीके का statement based question आता है तो क्या हमारी approach रहनी चाहिए यहाँ पर? First thing is we need to identify the central topic. Second thing is we need to identify the demand of the question. Third thing is we have to focus on the keywords. Central topic की बात करी जाए तो here the central topic is PGI, Performance Grading Index 2.0. What is the demand of the question? We need to identify incorrect statement here. Now we are required to analyze the focus on the keywords of these particular statements. So the first statement is ये एक nationwide evidence based framework है which is introduced by Ministry of Education. Absolutely right. Now the next part is to rank schools individually on their academic and infrastructure performance. तो definitely academic और infrastructure performance से सब हमारे domains का part थे, right? But are we ranking the schools or we are ranking the states and union territories? This is something you will be telling me in the chat box. Okay. Moving to the second statement, 73 distinct indicators are there, 2 broad categories are there, and 6 domains are there. Absolutely right. Third statement. According to the report, Chandigarh was on the top position, जिसने स्कोर किए 703 and retained the position for 3 consecutive years. तो 3 consecutive years के लिए हमने ये स्कोर अटेन करके रखा है दोस्तों. That is absolutely right. We have discussed this part. The statement is also right. Now what about the first statement? I told you specifically that when we are creating the grades for this PGI, we have seen that we have placed the states and union territories across those grades. That means we are not ranking the schools individually, we are ranking the states and union territories. And that is why option E is the right answer, because statement number 1 is incorrect here. Only one is the right answer, that is option E. And again I can see all the people have given me the right answer as option E. That's really good guys. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन. And homework question is on the Energy Transition Index 2025 that we have covered, and you are required to tell me the right answer in the comment section. If you really feel confident that yes, after the discussion that we have done in the today's session, if you will be able to answer this question, try to give the answer in the comment section. ठीक है, इसके लिए आप सेशन को फिर से भी देख सकते हैं. Then you can also try to give the right answer. अगर हम बात करें होमवर्क क्वेश्चन प्रीवियस सेशन की दोस्तों, so the question was on QS World University Rankings for 2026, and here the right answer is option C. So the people who have answered the question correctly in the comment section, these are the star performers of the previous session. And who are these people? A long list is here. Who are the star performers? Nandini, Gururaj, Kumar, Vishwajit, Pranathi, Sharayu, Siddharth, Harish, Mayank. All the people are basically the star performers, including Anushka, Sachi. Then we have Akshita, Sarvar, Happy, Laisfan, Akansha, Nikhil. So all the people guys, I'm really glad to see your performance in the chat box, and you have to ensure that you are keeping up the momentum. And now guys, today you are also required to tell me here in the chat box, in the comment section, that after discussing this particular detailed current affairs in our session, are you guys able to retain the information or not? So जो हम रिविजन टेस्ट आपके डेली बेसिस पर लेते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम MCQs को सॉल्व करते हैं. Are you guys feeling confident after attending these sessions? Please tell me in the chat box, right? So guys, that's all from the today's session. And if you liked our session, you can definitely press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. क्योंकि वहां पर हमारे कोर्सेज के अंदर भी हम और डिटेल के अंदर आपको चीजें कवर करके देते हैं, so that आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन एक अच्छी डायरेक्शन में रहे. और उसके साथ साथ if you are thinking to appear and if you are thinking to come and join the next session, so उसके लिए रेडी रहिएगा कि वहां पर भी एक रिवीजन टेस्ट आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा. And in order to revise it, one part is that you have to again watch the session. The second thing is you can also revise from the PDF of the session.
which you will be getting from the Telegram channel. तो Telegram channel को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को एक्सेस कीजिए, डाउनलोड कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई रियली बिलीव कि आज का सेशन भी आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, feel free to ask your queries in the comment section, ठीक है, and I will be answering your queries there. So Anushka was having one of the query that, sir, please take our weekly test and monthly test. So we are already taking on the daily basis a revision test, right? And for the monthly, my dear friends, let me tell you that we are already running a monthly revision series, ठीक है। जस्ट अभी हमने अप्रैल के इंपॉर्टेंट मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अभी कवर किया है, ठीक है। सो ये काफी जरूरी है हमारे लिए चीजों को कवर करना। और अभी दिस वीक वी हैव कवर्ड द इंपॉर्टेंट आरबीआई नोटिफिकेशंस। आने वाले वीक में भी हम एक इंपॉर्टेंट सेशन लेंगे आपके रिवीजन का। सो मंथली रिवीजन वहां से आपकी पूरी हो जाती है, ओके, डू नॉट वरी। और डेली रिवीजन टेस्ट हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं सो दैट आप चीजों को अच्छे से याद कर सके, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। और स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है और आप कोई मेंटरशिप गाइडेंस चाहते हैं हमसे, फील फ्री टू बेसिकली show your interest in that, and you can feel free to basically comment that part in the comment section. Apart from that, आप हमें email भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in पर। You can call us at 8146207241. And do not forget to tell me about whether you are feeling confident after watching these sessions or not. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all